Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nadia Malik from NM Language Academy. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss about major characters in Waiting for Godot. Let's move towards our characters. First character is Vladimir, one of the two main characters of the play. Estrogen calls him Didi, and the boy addresses him as Mr. Albert. He seems to be the more responsible and mature of the two main characters. He is also able to remember people's identities, unlike Estrogen and Pozo, who forget each other in Act 2. He seems to be the only one who is really outraged at Pozo's horrible treatment of Lucky in Act 1, but he doesn't actually do anything to help him. Vladimir is the major character of Waiting for Godot. Vladimir is considered sensible and mature as compared to Estrogen. And Estrogen called him Didi. Didi is the word that is used for elder women to call with respect. Didi का word जो है वो बड़ी उम्र की जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए. तो एस्ट्रोगन जो है वो व्लादिमीर को डीडी कहता है. और इसी तरीके से जो बॉय है, जो कि एक और कैरेक्टर है वेटिंग फॉर गोडो में, वो उसे क्या कहता है, मिस्टर अल्बर्ट कहता है. तो हम देखते हैं कि व्लादिमीर जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं एस्ट्रोगन के साथ. देन हम देखते हैं कि व्लादिमीर की जो मेमोरी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ही कैन रिकॉल द आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल. ही कैन रिकॉल द इवेंट्स दैट वाज हैपेंड बिफोर और इन द पास्ट टाइम. उसको जितने भी वाक़यात होते हैं या जिन लोगों से उसकी मुलाकात हो चुकी होती है व्लादिमीर की, वो उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकता है. अनलाइक एस्ट्रोगन एंड पोजो हु फॉरगॉट ईच अदर इन एक्ट 2. अब क्या होता है, पोजो और एस्ट्रोगन जो है वो खुद एक दूसरे को भूल जाते हैं, वो नहीं जानते कि वो कौन है और उनकी आइडेंटिटी क्या है. इसी तरीके से हम देखते हैं कि व्लादिमीर जो है वो आउटरेज्ड हो जाता है व्हेन ही सीज दैट पोजो ट्रीट्स लकी बैडली जस्ट लाइक एनिमल, जस्ट लाइक डॉग. कि जब पोजो जो है वो लकी के साथ उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, हॉरिबल होता है, तो वो गुस्से में आ जाता है. But he doesn't actually do anything to help him. But he was unable to help Lucky in this regard, to save Lucky from Pozo's bad treatment, just like animals. तो लेकिन हम ये देखते हैं कि वो लकी को जो है वो पोजो से बचा नहीं सकता है, जो कि उसके साथ एनिमल की तरह बिहेव करता है, जस्ट लाइक स्लेव की तरह बिहेव करता है. नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर. Our next major character is Estrogen, the second of the two main characters. Vladimir calls him Gogo. He seems weak and helpless, always looking for Vladimir's protection. He also has a poor memory, as Vladimir has to remind him in the second act of the events that happened in the previous night. Estrogen repeatedly wants to leave, but each time Vladimir reminds him that they must stay and wait for Godot. एस्ट्रोगन भी हम देखते हैं कि ये भी मेजर कैरेक्टर है वेटिंग फॉर गोडो का, और व्लादिमीर जो है उसको गोगो कहता है. द वर्ड गोगो इज़ यूज्ड फॉर द पीपल हु डांस इन डिस्को. तो ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो डिस्को में एंटरटेनमेंट के लिए डांस करते हैं. तो व्लादिमीर उसको गोगो का जो है वो नाम से पुकारता है, जैसे हमने देखा कि एस्ट्रोगन जो है उसको डीडी कहता है. ही सीम्स वीक एंड हेल्पलेस. एस्ट्रोगन जो है हमें वीक नज़र आता है, हेल्पलेस नज़र आता है, और हमेशा जो है उसे व्लादिमीर की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उसकी जो कंपनी है उसकी ज़रूरत होती है. ही थिंक्स दैट इन द कंपनी ऑफ व्लादिमीर ही इज़ सेफ. उसे लगता है कि व्लादिमीर की कंपनी में ही वो खुद को महफूज महसूस करता है.
He also has a poor memory as Vladimir has to remind him in the second act of the events that happened the previous night. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर की जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग है, बट स्ट्रॉगन्स मेमोरी इज़ वीक. ही फॉरगेट्स ईच एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड इवन इन द प्रीवियस नाइट. उसको वो तमाम वाक़यात जो है वो भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अगर वो ज़्यादा पुराने वाक़यात ना हों, चाहे वो लास्ट नाइट के ही क्यों ना हों. एस्ट्रोगन रिपीटेडली वांट्स टू लीव. अब स्ट्रोगन जो है वो बार बार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, बट ईच टाइम व्लादिमीर रिमाइंड्स हिम दैट दे मस्ट स्टे एंड वेट फॉर गोडो. लेकिन व्लादिमीर उसको रिमाइंड करता है कि वी आर हेयर इन द वेट ऑफ गोडो. गोडो विल कम टू सी अस एंड टू प्रोटेक्ट अस. उसे लगता है कि व्लादिमीर को कि जो गोडो है वो आएगा और वो उन्हें सेव करेगा. Now we see our next character, Pozo, a traveling man dressed rather elaborately. He arrives driving an other man, Lucky, forward by means of a rope around the latter's neck. He passes by the spot where Vladimir and Estrogen are waiting and provides a diversion. In the second act, he is blind and does not remember meeting Vladimir and Estrogen the night before. He is particularly helpless in Act 2 when he is inexplicably struck blind and is unable to get up after falling to the ground. पोजो जो है हम देखते हैं कि वो एक ट्रैवलिंग मैन है, अच्छी ड्रेसिंग में है, वेल ड्रेस्ड है, बट ही इज़ ड्राइविंग एन अदर मैन, हिज नेम इज़ लकी, बाय द मीन्स ऑफ रोप अराउंड हिज नेक, जस्ट लाइक dog. Pozo treats Lucky just like dog. He was just like carrying Lucky just like a rope and dragging and driving Lucky as people behave with animals or dog particularly. तो वो उसके साथ वैसा ही सलूक करता है जैसे कि लोग डॉग्स के साथ करते हैं, एनिमल्स के साथ करते हैं. This treatment of Pozo is showing the slavery at that time when the people were maltreated and there was just like division between races, different races. तो हमें यहाँ पे जो वो races का जो difference था वो नज़र आता है, slavery का जो point है वो नज़र आता है. He passes by the spot where Vladimir and Estrogen are waiting and provides a diversion. तो जब वो वहाँ गोडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं व्लादिमीर और स्ट्रोगन और पोजो का गुजर भी वहीं से होता है, तो ये एक डाइवर्जन क्रिएट कर देता है. इन द सेकेंड एक्ट ही इज़ ब्लाइंड एंड डज नॉट रिमेंबर मीटिंग व्लादिमीर और स्ट्रोगन द नाइट बिफोर. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्ट में ही बिकम्स ब्लाइंड जस्ट लाइक ड्रामेटिकली. सडनली वो जो है वो ब्लाइंड हो जाता है और उसको जो व्लादिमीर और स्ट्रोगन के साथ मीटिंग थी उसको भी जेन से निकल जाती है. ही इज़ पर्टिकुलरली हेल्पलेस इन एक्ट 2 और इस तरह से हम देखते हैं कि वो हेल्पलेस हो जाता है. व्हेन ही इज़ इनएक्सप्लिकेबली स्ट्रक ब्लाइंड. इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है अनएक्सप्लेनेबल, यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, हम बयान नहीं कर सकते हैं उसको कि किस तरह से वो सडनली जो है वो ब्लाइंड हो जाता है एंड इज़ अनएबल टू गेट अप आफ्टर फॉलिंग टू द ग्राउंड. और जब वो नीचे गिर जाता है तो वो इस काबिल नहीं है कि वो उस ऊपर ज़मीन से जो है वो उठ सके. Now we see the next character. Our next character is Lucky, Pozo's slave, who carries Pozo's bags and stool. अब लकी जो है वही हमें स्लेव, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो उसके साथ स्लेव की तरह जो है वो बिहेव करता है. ये उसका स्लेव है और उसने पोजो के बैग्स और स्टूल को जो है वो उठाया हुआ है. इन एक्ट 1 ही entertains by dancing and thinking. Pozo treats him horribly and continually insults, addressing him only as pig. He is mostly silent in the play, but gives a lengthy, mostly non-cynical monologue in Act 1. However, in Act 2, he is dumb. The play's most obvious figure of physical suffering and exploitation as he is whipped, beaten, and kicked by other characters. तो लकी को हम देखते हैं कि उसके साथ जो है वो मॉल ट्रीट होता है, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और उसका जो मास्टर पोजो है, ही ऑल द टाइम इंसल्ट्स हिम एंड कॉल्स हिम एज पिग.
फॉर इंसल्टिंग हिम। उसे जो है पिग का नाम देता है उसकी इंसल्ट करने के लिए। एंड वी सी दैट लकी मोस्ट ऑफ द टाइम इन द प्ले इज साइलेंट, ही स्पीक्स लेस। वो कम जो है वो बात करता है और क्या करता है, हमें ज़्यादातर खामोश नज़र आता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक्ट 1 में उसकी जो नॉन सिनिकल मोनोलॉग है वो हम उसको देखते हैं, लेकिन फिर हम एक्ट 2 में उसको डम देखते हैं। डम का मतलब है बिल्कुल क्वाइट हो जाना, खामोश हो जाना। लकी जो है एक ऐसी फिगर है हमारे प्ले में जो कि हमें फिज़िकल सफरिंग की और एक्सप्लॉयटेशन की जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है, एज ही इज़ whipped, बिटन एंड किक्ड बाय अदर कैरेक्टर्स। बाकी कैरेक्टर्स जो है उसको मारते पीटते हुए और उसकी इंसल्ट करते हुए नज़र आते हैं। Our next character is Boy, the unnamed boy who brings a message from Godot in both acts. Both times he tells Vladimir and Estrogen that Godot is not coming, but will come the next day. It is unclear whether the same boy comes in both acts or whether these are two different characters. When the boy asks Vladimir if he would like to send a message to Godot, Vladimir asks him to tell Godot simply that he come and see Vladimir. अब बॉय का जो कैरेक्टर है वो भी हमें इसमें नाम के बारे में तो हमें नहीं बताया गया कि उसका क्या नाम है, लेकिन हम देखते हैं कि ही ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम गोडो, कि गोडो की तरफ से वो मैसेज लाता है फॉर व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन दैट गोडो इज़ नॉट कमिंग टुडे बट गोडो वुड कम नेक्स्ट डे। वो 2 दफ़ा आता है और दोनों दफ़ा यही पैगाम देकर चला जाता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो व्लादिमीर और एस्ट्रोगन से भी कहता है इफ़ दे वांट टू सेंड एनी मैसेज टू गोडो दे कैन, तो अगर वो उसके लिए कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि व्लादिमीर कहता है कि उसको कोई मैसेज नहीं देना, जस्ट यही कहना है कि ही शुड कम एंड सी व्लादिमीर, कि उसे आना चाहिए और व्लादिमीर से मिलना चाहिए। बट द थिंग इज़ अनक्लियर हियर दैट द टू पर्सन्स हु कम इन द प्ले आर सेम आर डिफरेंट, कि दोनों दफ़ा जो बॉय का कैरेक्टर है वो वही लड़का है या फिर डिफरेंट है, इसके बारे में प्ले में जो है वो कुछ नहीं बताया गया। Now we move towards our next major character, Godot, the man for whom Vladimir and Strogan wait unendingly. Godot never appears in the play, but he is entity that Vladimir and Strogan are waiting for him because of his name's resemblance to God. Godot is often read as Beckett's version of God, an absent savior who never comes to the aid of those suffering on earth. गोडो का जो कैरेक्टर हम देखते हैं कि दिस इज़ द पर्सन फॉर होम एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर बोथ आर वेटिंग एंड देयर वेट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। उनका जो वेट है वो बहुत ही तवालत अख्तियार कर जाता है। गोडो नेवर अपीयर्स इन द प्ले, लेकिन गोडो कभी भी प्ले में जो है वो नज़र नहीं आता है। देयर इज़ एन एलिमेंट दैट गोडो इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकर्स ओन इमेज आर विजन अबाउट गॉड। गॉड के बारे में उसका जो अपना विजन है या इमेज है सैमुअल बैकेट का, उसको जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसकी प्रेजेंटेशन है यहाँ पे गोडो के कैरेक्टर में। वो समझता है कि गोडो इज़ अ सेवियर फॉर द सफरिंग ह्यूमैनिटी ऑन द अर्थ। गोडो वुड कम एंड द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी रिजॉल्व्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ गोडो ऑन अर्थ। उसे लगता है कि जैसे ही अर्थ पर जो गोडो आएगा तो जितने भी इंसानियत के प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग में हैं, उनके साथ मॉल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो तमाम के तमाम जो है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। Okay, dear students, this was our today's lecture regarding major character of Waiting for Godot. Inshallah, we will see in the next lecture with some new topic. Till then, Allah Hafiz.